Assalamu alaikum everyone. So this time we are doing topic number 8 of O-level chemistry 5070. So quick revision of this topic. So let's just start. Periodic table. अच्छा, periodic table के अंदर we have alkaline metals, alkaline earth metals. Group 1 is alkali metal, group 2 is alkaline earth metal. What are groups? Groups are column, which are present in periodic table. Okay, so groups are basically a column of elements with similar properties. So you can see over here, this is group number 1 in the periodic table, and number 2, the vertical columns. They are known as group, and they represent uh, number of valence electrons or charge on an element. For example, group 1 has +1 charge, group 2 has charge of oxidation state of +2. When we are mentioning oxidation state, if they are in an integer, sign will come before that. If we are mentioning charge, then sign will come after that. Okay. So over here, if we mention oxidation state, it is +1, +2. Then we have group 3, which is having +3. Okay, to lose 3 electron, and then we have group 4. It may lose 4 electron or it may gain 4 electron. And then we have group 5 to gain 3 electron, and the charge will be -3. Then group 6 has charge of -2, and then group 7 has charge of -1. And then we have the inert gases or noble gases, their charge is 0. Okay. Hydrogen, on the other hand, is not part of any group. Similarly, these elements over here, they are known as transition elements. Okay, you guys are familiar with it. Just in order to revise, I just told you guys about it. So, in this topic, periodic table, we will discuss alkali metal in detail, alkaline earth metal. We will discuss halogens, group 7 metals, and noble gases, group 0 element. And then we will discuss transition element, which I just showed you guys. Okay, and then what are we discussing in them? We will discuss the trend and gradual properties of change down the group. Okay, so coming towards the first group, which is group 1, and before that, arrangement of elements. So, structure of the periodic table is arranged in periods, rows, uh, in the periodic table. So, every row is not as a period. For example, this first row is period number 1. This is period number 1. And then this is period number 2, then 3, then 4, so on and so forth. Okay. What does these period represent? They represent number of electron filled shells. For example, period 2, all the elements have 2 electron filled shells. Neutral elements. We are talking about neutral element. For example, lithium, it has proton number of 3, atomic number of 3. So there will be uh, 3 electron as well in a neutral atom of lithium. So how these electrons will be configured in electron field shell? In first shell, there will be 2 electrons, and in second shell, there will be 1 electron. We have already discussed it in atoms, elements, and compounds. So group number shows number of outermost electrons. The period number shows number of electron field elements are arranged in order of increasing proton and atomic number. Okay, there was a question in maybe in worksheet or in exam where they ask about how the elements are arranged in periodic table. It was a multiple choice question, and most of the students did it wrong. um, it is proton number. The elements are arranged according to the proton number, not the atomic mass. Okay, they are not arranged according to atomic mass. Okay, they are arranged according to proton number. Group number shows number of outer shell electron. Period number shows number of electron filled shells. Okay. Then we have change across period. From left to right across the period, metallic property change to non-metallic characters. Okay. And electronegativity increase. As I told you guys that when they form bond, the charge on each ion on the left side it is positive, and then as we go down the group,
the charge on the ion in when they are forming uh, ionic bond or any sort of bond, the charge is negative. On the right side, it's positive on the left side. So electronegativity, it increases. Electronegative by electronegativity means the tendency to form negative ion. Okay, it increases. Electrical conductivity decreases. Metals are good conductors of heat and electricity, and they are on the left side in the periodic table, while non-metals are on the right side. So electrical conductivity decreases as we go from left to right. Oxides change from basic to amphoteric and then acidic. As we already studied in acid, bases, and salt, aluminium and zinc oxide, they are amphoteric. They are example of amphoteric oxide. On the left side, we have the basic oxide like if magnesium will or calcium will form an oxide, or beryllium will form an oxide, it will be basic in nature. It will be a base. And then moving on uh, from transition metal, it will change from and zinc and aluminum are example of amphoteric oxides. Means they react as acid or as base as well. And then on the if we move further, we have acidic oxide like carbon dioxide, nitrogen oxides, sulfur oxides. So these all oxides are non-metal oxides are acidic. Relationship between group and ion charge. Okay. Group 1, it has charge of +1, as I told you, while group 2 has charge +2, group 3 has +3, group 5 has -3, 4 is having, it may have charge +4, -4, and group 6, it has charge -2, and 7 is -1, and then 8 has no charge. Okay. Uh, then we have similarities in the group. Elements in the same group have similar chemical properties. Okay, this is also property of a group. Because why they have similar chemical properties? Because they have same number of outer shell electrons. Okay, these sort of things they may come in MCQs or maybe 1 mark or 2 mark question in paper 2. Okay, so this is very useful information that you must remember. Example, group 1 element metals are all form +1 ion. They have charge of +1 and react vigorously with water to form hydroxides and hydrogen gas. Okay. Predicting the properties, position of an element, predicting the property and the position of an element, period and group helps to predict the reactivity, type of compound form, acidic, basic nature, as well as physical state and bonding type. Okay, as we go down the group, usually density increases and the physical state also changes, as in case of group 7. We will discuss it in detail afterwards. Um, Trends in group. Down the group, atomic size increases, as I told you earlier. Reactivity of the metal increases, reactivity of non-metal decreases. Okay, we will discuss now. For example, if we take an example of group 1, general property is lithium, sodium, and potassium are examples of these elements. They are soft metal, means they are not hard metal. They can be cut with a knife. Okay, if they are not exposed to air, because they are so much reactive that even if they are exposed to air, they will react with mm, oxygen present in air or the moisture present in air, the water particles which are present in air as water vapors or gaseous form. They are shiny when freshly cut. When they are freshly cut, they are shiny, but tarnish quickly in air. Why they tarnish? Because a layer of oxide forms on them. If we have sodium or potassium um, or lithium, what will happen if we cut them and expose them to air? There's very quickly the outermost layer of these elements or these metals, it will form a layer of oxide and the color will be changed. The color will be darkened. वो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा. ठीक है, जो शाइनी ग्रे कलर है वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, ये भी कहीं मतलब किसी ना किसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन आ सकता है. एनीवेज, ट्रेंड डाउन द ग्रुप. मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली मैंने बताया. अच्छा, melting point decreases. Okay, why melting point decreases? Atom get larger, weaker metallic bond. Okay,
मेटालिक बॉन्ड यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड के मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे गेट डीलोकलाइज, और वो उस वक्त होंगे जब डीलोकलाइज उस वक्त होंगे जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जब दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो वो डीलोकलाइज इजीली हो जाएंगे। बट ओवर हेयर इन ग्रुप वन basically atoms electron atoms are get bigger as we go down the group। ठीक है, इस तरह हम नीचे जाते जाएंगे एटम्स बड़े होते जाएंगे। यू कैन सी एट द रिलेटिव एटॉमिक मास, फॉर lithium it is 7, then for sodium it is 23, and so on and so forth, 39, 85, 133 is too big। Okay, so as we go down the group, their metallic bonding property it decreases because atomic size increases, and so is the property of melting point, so it decreases। Okay, the atom get larger, density increases. As I told you about density, it depends on the atomic size. So atomic size increases, relative atomic mass increases, and so is the density. Atoms are more closely packed, okay, and they have larger atomic size. So as you go down the group, in group one, the density increases. Reactivity increases. Why reactivity increases? We have already discussed in the class as well that the group one metal they lose their outermost electron. The outer electron is further from the nucleus as we go down the group. साइज एटम का बड़ा हो जाता है और देयर आर मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, so there is a shielding effect, okay, and there is a lesser force of attraction between nucleus and the outermost electron, and it is easy for outermost electron to lose uh, it is easy for element to lose their outermost electron। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, रीजंस के साथ इनको अगर याद कर लेंगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अ, होता क्या है कि वो जब आपके पास पेपर आता है ना, ग्रुप 7 और ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज को आप लोग यूजुअली मिक्स कर देते हो। वहां पे डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है फॉर ग्रुप 7, एंड फॉर ग्रुप 1 इट इंक्रीजेस, तो उसका उल्टा आप लिख देते हैं। डेंसिटी तो चलो सेम है, डेंसिटी तो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दोनों के अंदर एज वी गो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, वो तो सही है। बट रिएक्टिविटी की जब बात आती है तो अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट वो भी ग्रुप 7 के अंदर एज वी गो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाता है। आयोडीन जो है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, while iodine is solid at room temperature and pressure. Bromine is liquid at room temperature. सही है। So we will discuss about reaction. Okay, group 1 metals, we all know that they react with water to form uh, alkaline solution. And what are the observation? It fizzes, it's float. If we put sodium in water, it will float, it will fizz, forms alkaline solution. With oxygen, forms oxide, for example, lithium oxide, sodium oxide, and potassium oxide. With chlorine, it will form white salts like sodium chloride and potassium chloride. Prediction. Heavier alkali metals like rubidium and cesium are softer and denser and more reactive. Okay. As you go down the group, they will be more reactive. Okay. And they will be softer and they will be dense. Okay. Next is group 7. Group 7 elements, general properties, examples are chlorine, bromine, iodine, diatomic, non-metallic nature होती है इनकी, exist as molecules, diatomic molecule H2 means Cl2, Br2, I2, इनका फॉर्मूला ये होंगे when they are in pure form. The elements they are in diatomic form. They are toxic and colored. That's thing. Chlorine is green color, pale yellow green color की gas होती है. Then bromine is brownish color, and then uh, iodine is ब्लैकिश कलर होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड्स कैसे होते हैं? जिनकी को डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे कि ग्रुप 1 में थी रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ग्रुप 1 में रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो यहाँ डिक्रीज करेगी। और रीजन वही है कि क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है टू मेक अ बॉन्ड विद एनी अदर आयनिक बॉन्ड विद एनी अदर मेटल। ठीक है, तो मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना है, अट्रैक्ट करना है।
So more the distance between outermost electron and nucleus, so it will be difficult for nucleus to attract the electron. ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. सो होना ही चाहिए कि बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ग्रुप 7 के एलिमेंट ने, तो जितना उसका न्यूक्लियस दूर होगा दरमियान और इलेक्ट्रॉन को, उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए किसी और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना. सो रिएक्टिविटी, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. कलर, इट डार्कन्स, हमने जैसे देख लिया. फिजिकल स्टेट चेंजेस, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है, तो फिजिकल स्टेट चेंज होती है. गैस से लिक्विड, क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, एसिटोन इज गैस एंड आयोडीन इज सॉलिड. ओके, अपीयरेंस एंड रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया कि पेल येलो ग्रीन कलर की गैस होगी, एंड देन वी हैव ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर, आयोडीन इज ग्रे ब्लैक सॉलिड. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आते भी हैं. द मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. जैसे पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को अगर उसके अंदर क्लोरीन गैस को बबल कराएंगे एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन के अंदर, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्लोराइड एज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. ब्रोमीन इज डाउन द ग्रुप, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी. ठीक है, क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. सो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करेगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, कि क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, देन ब्रोमीन है, और फिर उसके बाद आयोडीन. प्रिडिक्शन, डाउन द ग्रुप हेलोजेंस बिकम लेस रिएक्टिव, डार्कर एंड डेंसर, जैसे उनमें बात की. ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ आ जाते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स फाउंड इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल बिटवीन ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. ऑल मेटल्स विद हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है. हाई मेटेरियल इन बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, जब मेटल की जनरल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी ना, तो उसके अंदर अगर आप हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखोगे तो शायद ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उस पर पूरे ना उतरे. ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है वो सॉफ्टर होते हैं, उनके थोड़े मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा कम होता है. ठीक है, डेंसिटी भी कम होती है, डेंसिटी वाली बात भी शायद पूरी नहीं निकली. हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से. ठीक है, ऑब्वियसली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सोडियम की बात करें चाहे पोटेशियम की बात करें, एज अ प्योर मेटल दे विल कंडक्ट. तो गुड कंडक्टर्स वाली बात सही होगी. किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली बात भी सही होगी, बट हाई डेंसिटी वाली बात वो गलत हो जाएगी, बिकॉज जैसे हमने बताया कि वो फ्लोट करते हैं. ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं उनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, सो मच सो दे फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स. ठीक है, तो जब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात आएगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दो बातें किसी हद तक सही है. डेंसिटी वाली बात वो गलत हो जाएगी. हाई डेंसिटी अगर किसी ने लिखा तो वो जनरल प्रॉपर्टी नहीं है मेटल की, वो ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे आयरन 2, आयरन 3, इस तरह कॉपर 1, कॉपर 2 फॉर्म कलर कंपाउंड. जितने भी ट्रांजिशन मेटल होंगे वो कलर कंपाउंड बनाएंगे. जैसे कॉपर 2 सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन क्लोराइड येलो ब्लू कलर का होता है. एक्ट्स एज कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. आयरन इन हैलो प्रोसेस, निकल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है और उसको इंशाल्लाह कोई बात नहीं करेंगे. नोबल गैसेस ग्रुप 8 के, इनके पास अल्लाह का दिया जैसे मिलता है, सब कुछ होता है. वो उनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर एक शेल है जैसे हीलियम है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और क्योंकि ग्रुप 8 है तो बाकी में सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर. सो मतलब ये फिर किसी से रिएक्ट नहीं करते. तो ये क्या क्या बनाते हैं, मोनोटॉमिक गैस एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, अनरिएक्टिव, इनर्ट होती है ड्यू टू कंप्लीट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, कलरलेस, ऑडोरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल होती है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे नीचे जाते जाते हैं तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे कि मेटल का, सॉरी, गैस का जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज बड़ा होता जा रहा है, मास ज्यादा होता जा रहा है, एटॉमिक मास ज्यादा होता जा रहा है. तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम जो है बलून के अंदर डलेगी, एयर शिप्स के अंदर डलती है. इसी तरह नियॉन है, नियॉन साइंस, नियॉन लाइट्स. ठीक है, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग लाइट्स, इसके अंदर नियॉन को यूज किया जाता है, उसको करंट पास किया जाता है तो वो ग्लो करने लग जाती है. आर्गॉन इज इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग. ओके, इट इज यूज इन वेल्डिंग, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग के अंदर और लाइट बल्ब के अंदर यूज होती है.
सिमिलरली क्रिप्टॉन इज फ्लैश लैम्प के अंदर क्रिप्टॉन यूज होती है। जीनॉन इज यूज इन कार हेड लैम्प्स, ठीक है, वहाँ जीनॉन यूज होती है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।